the onset, I would like to thank Taral Bhai and his committee. First, Atul Bhai will begin. Just relax. Yeah. Yes, Atul Bhai. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન ખુલ્લું મનના વક્તા શ્રી હસમુખભાઈ દેવાણી, જસુબેન દેવાણી અને શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti. Shanti. ખૂબ ખૂબ આભાર કેશવબેન. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની શરૂઆત માટે આમંત્રણ આપું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you, Atul Bhai, and welcome everyone from India and abroad. Today we are going to have a very interesting debate on the open mind by Hasmukh Bhai. Let me give his small introduction. He was born in 1940 in Lindi, Tanzania, studied up to O level in Cambridge University, joined family business. He is actively involved in all sports, especially swimming, and he established TS Lodge in 1972, moved to the capital city of Dar es Salaam in 1975. In 1978, he became president of DSM Lodge. From 82 to 2000, he remained president of TS. He was also elected General Secretary of East Africa section of TS, which is combining of Kenya, Uganda, and Zambia. In 2000, he migrated to USA, and since then, he is there in Canada. He is very active in Chinmay weekly meetings also, and he is really active. He has done wonderful things because he was elected as General Secretary of Lohana community there also, and joined board of directors of Hindu Mandal as a parent body, which is the parent body of 22 Hindu societies. So he's a very active member, and we are very fortunate to have him always on Triveni. Sir, please go ahead with your today's subject. Your first part will be in 18 minutes, and then you will come back again after other two speakers for your second 18 minutes parts. Welcome, Hasmukh Bhai. Please unmute yourself. Yes, sir. Do you realize what is happening to your monkey mind? My silence is created so much confusion in your mind, and you are making so many assumptions. Is that right? Yes. So the biggest hurdle for open mind is our assumptions, which we carry forward from life after life. So those assumptions are our characteristics. And to come over from those assumptions is a very difficult task. And if you can manage to do that, then you are winning a battle. So I would say in the onset that if the first button of your shirt is wrongly placed, all the buttons will go wrong. So the open mind is the main factor in the golden stair series of the Madame Blavatsky, she said. If you have an open mind, then all the other virtues will start following you.
Otherwise, every virtue will turn into vices and all negative forces. So assumption. And Linda Goodman has, in his book of numerology, has said that split the word assume, then it becomes S, you, and me. So the moment I assume something without even verifying anything, then I make myself an S, and I make everybody else. I'm here not to belittle everybody, but just to give an idea as to really how much closed thinking we can become, and how much little we might know with assumptions in our mind. So the first thing is that we stop making assumptions on any sort, and even if you assume, make sure that you verify and try to find out the truth. So this could not be approached through the foreign open mind. Our rishis have stressed that thought forms that grip us are all sanskaras made in our nervous system by past experience recorded in the Akashic field. Now, we, as Theosophical Society's study group, you must be aware of the Akashic field. And whatever single thought we carry now has an effect of it on all our 7 layers of our existence. And everything is recorded in the Akashic field. That gives us the characteristics which we carry with us. And that is our sanskaras. Now, those sanskaras, if we are really open-minded, if we can manage ourselves to be open and try to individually understand as to what is working within us, how it is working, and why it is working. So our best 5 friends are who, when, where, what, how, and why. If we can challenge ourselves every moment to moment, that whatever we know now is not enough or probably is not right, then you say, what is right? I'm looking for it. As Animation has said, the 3 questions only. So what is the truth? Is it love? Is it necessary? Then you come to some realization of truth, and create all the hurdles which are created within the mind are lost. All these creators we have created all these negative forces, and we have the power to reverse the process. Now here we'll be talking about how can reverse the process. And if you do this, there may not be much incentive to adapt, adopt, or accept new ideas. So the past, erasing of the past negative forces, erasing of the past sanskaras is the first primary thing we should know about. And how do we know about it? If we imagine a series of filters marked memory, beliefs, associations, and judgment, these are the 4 factors which has created the wrong memory or right memory within our mind. So memory, out of the memory, say, yes, 20 years back, somebody had scolded me, and I'll take my revenge. Beliefs, we have all our right or wrong beliefs we have. Then it's through associations also, and we make constant everyday judgment. Now, rather than making a judgment, we should don't challenge, but at least inquisitively ask questions to what is right, what is the truth. Then we come to know something. Each of these filters alter the raw data in some way or the other, invisibly and instantly. And at this very moment, we are creating a software in our mind. In the past also, we have created the software, and that software is already working here now. So we have that power to change it, right? And to change it for better. So a change at the subtlest level is the most powerful. That is what Krishnamurti has said. Change at the subtlest level means deep within ourselves. When we go for meditation and try to analyze our own mind thinking without any judgment and without winning or losing anything, we can come along with the true facts of our own system working, how it works, and to see and understand the intelligence that is holistic without a win or lose externally. For any given moment, even within yourselves, say, when we think that I want to win here, to win against whom?
against your own beliefs, or lose against whom? Lose against your own misbeliefs. But there is no win or lose here, but simply impartial observation of your own self, and that only can come through meditation. And meditation also has a challenge, because in meditation also we constantly go on the rut, and that rut is always within our mind. This gives us a chance to experience our mind field, what we popularly call open mind. So while sitting in meditation also, we might be biased, we might be prejudiced by our own thinking. So at that level, to stay totally impartial and independent is the crucial matter. And we have the power to grow in love, peace, and harmony. So that is our aim in life, that love, peace, and harmony. So the first question we should be asking ourselves is, whatever I'm doing, is it creating love? Is it creating peace? Is it creating harmony? Firmly on a firm footing, by asserting ourselves and say now on top of our voice, yes, I will. So when you assert yourself that no, I want to create love, peace, and harmony, and you are asking your own higher will, I will means to will with whom? To will with the will of your own higher self. So you are invoking your own higher self to will to create love, peace, harmony, understanding. And if you, even if you cannot create it because of the so much hurdles in it, then at least silently you can slide away. Rather than involving into the whirlwinds of the cyclone within, you can slide away and say, okay, fine, this is here. As we encourage such open-minded dialogues in our own areas of our mind, and every time challenge the mind. Am I open? Am I looking at 360 degrees of it? Or at that level, the most practical thing is razor sharp self-awareness. Here I'm using razor sharp self-awareness. So that self-awareness is the most important factor first. And then the second stage is our willingness to change, if change is necessary, or willingness to be firm if it requires the firmness of it, if you are right on it. And then acceptance that yes, I must change and I will change it. And as Deepak Chopra has said in his book, Life After Death, this type of mindset also helps us a lot when we pass over to the other worlds. Now, if I may elaborate here, whatever world we are in now is our physical world only, mostly. And secondly, we are being guided by our emotions and thoughts. Now, when the body dies, emotions and thoughts still remain. And if we cannot reconcile with those emotions and thoughts and see that no, that our phase or past phase is gone, then we will not be able to go further than that. So we have a gold mine in our life, this life. We have a gold mine of this life. We treat as a coal mine. Finally, I would like to quote at the feet of the master that says, we have to develop both the qualifications of first and the second ray. Now, first ray is a leadership ray, second ray is a teachership ray. And try to humbly learn and be a student. If that humbleness is within there, then we are prepared to learn as a student. And this level is every moment level. At this moment, while I'm speaking, I'm trying to be a student as well. While you are listening, you are trying to be a student as well. So shall we ask ourselves that am I really a student now? Am I listening with a total open mind? Whatever open mind you have, am I listening to it? Am I giving consideration to the point of view which I'm talking about? And try to be leader and guide in the lead as a leader. Now the second ray is teaching side. The first ray is leadership. Now, once you know something, at the feet of the master, Krishnamurti has said that, you try to help those who are below you and try to
lead who are above you. You try to you try to follow those who are ahead of you and try to lead those who are behind you. That means at every stage we have to be a leader. At every stage we have to have our first rank and the second rank. Theosophical society, and also from every opportunity given to us, we should try to develop that level of beginning within us. And if we do that, then probably we might be able to reach a stage where we can say that I have begun a life. I've taken a first step. And the first step you take, the step of the journey is 1,000 miles journey. Here I'll stop for my first phrase, and I'll reward to Taral by. You have finished it in right time. You still have some minutes, but then we can always take it in the second half. So over to Jasuben, and Jasu ji का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा. Her name is actually Jaswanti Devani, but she likes herself to call as Jasu. So we will also call her the same name. And she was born in Uganda, and from childhood, she was very much interested in all sorts of literature and searching for literature, searching for new things. She was very fond of Munshi-ji, the writer, Gurvant Acharya, Kundi Naka Kapadia. Actually, they were all her friends. As the children grew up, HASMUKH Bhai also was very active in theosophy. So she joined with HASMUKH Bhai to promote not only theosophy, but in a wonderful manner also. In Gujarat, she used to teach them Guru Charne, Anant Nyare, all different good books, so that those people or those ladies could understand this type of theosophical literature and all that. Then my favorite, she has done small beautiful plays, and she has written it, and not only written it, but have also directed all the ladies to act in such plays. Wonderful. Please send me some of them whenever you can. So this wonderful Jasuben Devani ji, Jaswanti Devani ji, आपका स्वागत है. और अब आप अगले 10-12 मिनट में हमें सारांश करिए पार्ट 1 का. Then we'll come again back for part 2. Thank you. Thank you, Taral bhai. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇનફેક્ટ TS ત્રિવેણીના સર્વ સભ્યોને મારા સાદર પ્રણામ. આજે અમને બંનેને આ તક આપવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શરૂઆત તો એ સવાલથી થઈ કે મારું એટલું સારું કે સારું એટલું મારું. અધિકાંશ પ્રસંગોમાં તો આપણને આપણે સાચા લાગે છે, અને તેને પુરવાર કરવામાં આપણે આપણી સર્વશક્તિને ગુમાવીએ છીએ. પણ આ કરવું બહુ ખોટું છે. આપણે બધા જે વિચારીએ છીએ તેના આંદોલનો આકાશિક જગતની અંદર અંકિત થાય છે. અને આપણે સૌ થિયોસોફીના સ્ટડી પ્રમાણે આપણે જાણીએ છીએ કે આ ગત સંસ્કારો વર્ષો વર્ષ જન્મો જન્મ આપણી સાથે આવે છે અને આપણે સાથે લઈને આવેલા છીએ. તો આ આપણને નડે છે ક્યાં? આ ગત સંસ્કારો હર પળે આપણને ખુલ્લું મન રાખવામાં વિક્ષેપ કરે છે, અને તેથી શું થાય છે? નવા વિચારોને જાણવા, સમજવા ને અપનાવવા માટે આપણા જીવનમાં તેનો કોઈ અવકાશ રહેતો નથી. ઘડીભર જો ખાલી આપણે વિઝ્યુલાઇઝ કરીએ કે આકાશ વાદળોથી ઘેરાયેલું હોય, તો ન તો સૂર્યનો પ્રકાશ આપણી પાસે આવી શકે કે ન તો ચંદ્રની શીતળતાને આપણે પામી શકીએ. તો આ બધા જ જ્યારે ખુલ્લું મન ના રાખીએ
અને આવા બધા પૂર્વગ્રહોને લઈને આપણે ઘેરાયેલું આપણું મન હોય ત્યારે મન નવું ક્યાંથી ગ્રહણ કરી શકે? શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિજીના મંતવ્ય તો એ છે કે સૌથી પહેલા તો આપણે બધ મથને ત્યાગી ને આપણા સ્વને શોધો. આપણે બહારની દુનિયાને શોધવામાં પડી ગયા છે. બીજાના જીવનમાં શું થાય છે એના માટે આપણે વ્યાધિ કરીએ છીએ. તો આપણે સ્વને નિરખીએ. સ્વનિરીક્ષણ આપણને તક આપે છે. કઈ તક આપે છે આપણને? ઊંચામાં ઊંચા સ્તર પરથી શુદ્ધિ અને પવિત્રતા, એકતા, સમત્વ અને નિસ્વાર્થ પ્રેમની ઝાંખી. આ બધું ક્યારે થઈ શકે? જ્યારે ખુલ્લું મન હોય તો જ આ બધું મેળવી શકીએ. નક્કર વાસ્તવિકતાના પગથિયા ઉપર ઊભીને ખુલ્લા દિલથી મોટા અવાજે આપણે સૌ એક સાથે બૂમ પાડીએ, આઈ વિલ, આઈ વિલ, આઈ વિલ. હું કરીશ, હું કરીશ, હું કરીશ, પણ પ્રભુ તારી શક્તિથી અને તારી કૃપાથી, મારા અહમથી નહીં. પછી વાત આવી 5 પગલાની. એક તો ઝોલા વગરનું જાગૃત જીવન. બીજું તત્પરતા. તત્પરતા શેના માટે? મારી અંદર જે નેગેટિવ છે, જેનાથી હું ઘેરાયેલો છું પૂર્વગ્રહોના બંધનોથી, એનામાં પરિવર્તન લાવવા માટેની મારી તત્પરતા. સકારાત્મક ચિંતન. આપણા સ્વના પરિવર્તન માટે આપણી પાસે સમય હોવો જોઈએ. મને ક્યાં બદલાવું છે? મારા જીવનની કોઈ વસ્તુ મને કઈ બાજુ નડે છે અને એના માટેની મારી તૈયારી છે? તો એ તૈયારી કોણ આપશે? વિવેક શક્તિ, પાવર ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન. પ્રત્યેક વસ્તુમાં, પ્રત્યેક પ્રસંગમાં આપણને વિવેકની જરૂર છે. ખૂબ આવશ્યકતા છે. સારા સારનો વિવેક. શું સારું અને શું ખરાબ, શું સત્ય અને શું અસત્ય. સ્વીકાર. દરેક બદલતી પરિસ્થિતિ અને સંજોગોને સ્વસ્થ મનથી સ્વીકારવાની તૈયારી. આજ આપણું જીવનનું ધ્યેય. અને આજ જે આપણે વાત કરી હમણાં જ ધ્યાનની, લવ, પ્રેમ, એકતા અને સંવાદિતા. અંદર માયલાની અંદર જો એક આ 3 દીપ પ્રગટે, એક તો પ્રેમ શક્તિ, અપ્રેમ, સંવાદિતા અને સાલસતાનો, તો એ આપણું પડેપણનું ધ્યાન જ છે. એ અવેરનેસ, એ સજાગૃતતા, એ ઝોલા વગરનું જીવન, એ ધ્યાન છે. અને હવે પછી આપણને કીધું દીપક ચોપરાના પુસ્તક લાઈફ આફ્ટર ડેથ, મૃત્યુ પછીનું જીવન. એની અંદરના કહેવા પ્રમાણે આવી ખુલ્લી મનોસ્થિતિ મૃત્યુ પછીના જીવનની બદલાતી પરિસ્થિતિમાં પણ સમાધાન મેળવવાની શક્તિ આપે છે, અથવા તો સમજણ આપે છે. મૃત્યુ પછી પણ આ જીવન ચાલુ રહેવાનું છે, મારું ફિઝિકલ બોડી જ નહીં હોય. અને ત્યાર માટે જો મારા મન ખુલ્લું હશે તો આ બધી તૈયારી મૃત્યુ વખતે પણ મને બહુ કામ લાગશે. છેલ્લે કહેવા પ્રમાણે આ જીવન એ આપણી એક સોનાની ખાણ છે. આપણે કદાચ ભોગ, વિલાસ અને તૃષ્ણાથી તેને કોલસાથી ખતબત્તી ખાણ બનાવી દીધી છે. અને કોલસામાંથી હીરો કાઢવો માટે એને તપાવવો જ પડે. ગુરુચરણે પુસ્તકમાંથી એવો આ લીધું છે. આપણે પહેલા ને બીજા ગોત્રના બંને લક્ષણો ખીલવવા પડશે. પેલું ગોત્ર છે લીડરશીપનું, એટલે કે નેતૃત્વનું. બીજું ગોત્ર છે તે શિક્ષક. શિક્ષક એટલે શું? જે શિક્ષા મેળવવા માટે તૈયાર છે અને સમય આપવા માટે પણ તૈયાર છે. અને આ જ શિક્ષકને વિનમ્રતાથી વિદ્યાર્થી પણ બનવાનું છે અને નેતૃત્વ પણ, અને સમય આવે નેતૃત્વ પણ સ્વીકારવાનું છે. ગુરુની પ્રેરણાથી આપણી પાસે જે પણ કંઈ સારું છે એ વેચવા માટેની હંમેશ આપણી પાસે તૈયારી હોવી જોઈએ. કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની તોય આંગળી ચીંધવા ઉભો રહું. આ રીતે આપણા ગુરુદેવના કાર્યને આપણે આગળ ધપાવીએ છીએ. થિયોસોફિકલ સોસાયટી દ્વારા જ્યારે અને જે તક મળે ત્યારે આપણી ગુરુદેવના કાર્ય માટેની તત્પરતા અને સઘના હોવી જ જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અદ્ભુત, અદ્ભુત, અદ્ભુત. સમયસર તમે બંને જણાએ આપણું વ્યક્તિત્વ આપ્યું
અને હવે હર્ષદભાઈ હું જરા સર્ચ કરી રહ્યો છું. હા, મળી ગયો. Let me give a introduction of HASMUKH-bhai. Harshavadan bhai, sorry. Harshavadan bhai is BA with English and Hindi, MA in entire English. His BEd in English and Geography, and has worked as English teacher in village area for 7 years. Then for 32 years, he was with Shri Vidyanagar High School in Ahmedabad, and also worked as principal in the same school and got retired in 2011. He's a wonderful person, teacher, no doubt about it, and also served as coordinator for Gujarat SSC Board English subject and set English papers for board exam for another 10 years. And he was a coordinator of SSC exam assessment in English subject also. He's always smiling, always doing theosophic activities. He joined, I think, 1972, same year as HASMUKH-bhai, I think, and worked as a secretary from 76 to 80 years, 1980. Then in 1986, he joined Rohit Lodge and served as president of Rohit Lodge for 25 long years, and has really done some wonderful work in this span of time. He was also releasing every month the Jyoti magazine from Gujarat Federation. Currently, he is president of Gujarat Theosophical Federation, and we welcome him. And he is also one of the very important pillar of Triveni. Welcome, Harshavadan bhai. Please, you have next 10 to 11 minutes for your टॉक इन हिंदी. आप हिंदी में बात करेंगे और उसके बाद हसमुख भाई वापस अपने पार्ट 2 के लिए लौटेंगे. थैंक यू. प्लीज गो अहेड सर. हाँ जी, तरल भाई, आपका विशेष आभार प्रकट कर रहा हूं. कुछ महीने हमारे बीत गए हैं क्योंकि बीच में मैं नहीं आ पा रहा था, और आज ये मौका हुआ है ऐसा कि हसमुख भाई बोल रहे हैं किसी और समय के एक अलग से छोर पर, और हम आज भारत में 6 बजे के शाम के बाद आप 7 बज रहे हैं, तो उस छोर पर है. समय इतना जो है वो बीच में जिसका हम मापन कर सकते हैं, लेकिन विचार जो है वो किसी समय की मर्यादा में नहीं है, और जो मन है वो भी हमारे किसी मर्यादा में नहीं है. लेकिन खुला मन जो आज का विषय है हसमुख भाई का, वो इतना ही बहुमूल्य विषय है कि जिस पर अगर सोचा जाए तो आज का त्रिवेणी जो सेशन है वो भी कम पड़ जाएगा. कई और सेशन करने तो पड़ेंगे ही. तो हसमुख भाई से तो हम ये कुछ ऐसी आशा रखेंगे आने वाले दिनों में. बिल्कुल बिल्कुल. जो विचार हमें जकड़ रखते हैं, जो हम संस्कार कहते हैं, और हमारे चेता तंत्र में जो भूतकालीन अनुभवों का संपुट बना रहता है, जिसके कारण संस्कार हमारे दृढ़ होते हैं. आकाशिक क्षेत्र में भी ये अंकित होते रहते हैं. हमारा जब मन खुला होता है तब इनका प्रवेश नैसर्गिक बनता है. हमारी बहुआयामी आदतें उनसे निर्मित भी होती है. जिसकी भी जैसी भी परिस्थितियां होती है, उसी प्रकार उनका चलन होता रहता है. वैदिक युगीन ऋषियों का कहना था कि आकाशिक क्षेत्र के जो भी अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, वे सब हमारी चेतना के कारण ही होते हैं. इसलिए एडेप्ट के लिए कोई वैचारिक नए आयामों की शुरुआत करना लाजमी नहीं है, क्योंकि जब हम स्मृतियां, मान्यताएं, संग और न्याय जैसे फिल्टरों के बारे में सोचते हैं, तब हर एक फिल्टर अप्रगट स्वरूप से और त्वरित रूप से कुछ ऊपरी सतह के क्रियाकलापों की छाप छोड़ते रहते हैं. इसलिए कृष्ण जी का कहना है कि अति सूक्ष्मतम स्तर पर जो भी परिवर्तन होता है वह अत्यंत ही शक्तिशाली होता है, और मनुष्य की उच्चतम प्रज्ञा का स्वरूप यह है कि अपने स्व को किसी भी नतीजे पर पहुंचे बिना ही निरीक्षण करते रहना. जब हम सिर्फ साक्षी भाव से कार्यरत रहते हैं, तब प्रज्ञा के स्तर पर ही समझदारी बढ़ती रहती है, और वही स्वरूप पूर्णत्व
या पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए बनता है, जिसमें न तो जीत होती है न ही हार होती है। ऐसे अनुभव के कारण ही मन के क्षेत्रों में खुलापन महसूस होता है। हमारे में ऐसी शक्ति निहित है जिसके कारण है तो शैतान को बढ़ावा दे या उसका उन्मूलन करे। साथ साथ वही ऐसी शक्ति है जो प्यार, प्रेम, शांति, करुणा, सद्भाव, बंधुत्व जैसे गुणों का वहन भी करती है। वही शक्ति वैश्विक कानून है जो हरेक कानून या नियमों की जननी है। वही शक्ति ऐसी ताकत बन जाती है जिसकी नींव कभी भी कमजोर नहीं होती। हमारी अंदरूनी ताकत एक सोने की खदान है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने जसू भाई। ये सोने की खान है, लेकिन हम उसे कोयले की खान बना देते हैं, तब्दील करते हुए हम सोचते भी नहीं है। हमें ही अपने आप में यह तय कर लेना है कि हम कभी भी डिगेंगे नहीं, बस सिर्फ हमारा कार्य करते रहेंगे। आई विल, आई विल, आई विल, ये तीनों बार उन्होंने बताया, जिसमें मतलब बहुत अच्छा निकलता है। मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, सिर्फ मैं ही करूंगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ऐसा तैयार करें जो सबसे आगे हो, हर एक का नेतृत्व करता हो, किसी दूसरों के पीछे न भागता हो, आपकी खुद की नेतृत्व वहन करने की क्षमता को याद रखें। इस प्रकार हमें जवाबदेही हमारी नियति के लिए होना ही है, हमारी डेस्टिनी भी, और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने और प्रेरक बल भी बने। हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में, हर एक क्षेत्र में खुले मन के साथ संवाद बनाए रखना है। किसी भी व्यक्ति को यह ताकत प्राप्त करनी है तो कुछ यहाँ पर बताए हुए 5 पायदानों पर आपको गौर करना है। सबसे पहला है स्वजागृति, दूसरा उन्होंने बताया स्वयं इच्छा, तीसरा है इरादा यानी इच्छा शक्ति एवं दैनिक वैधानिक हकारात्मकता, चौथा है विवेक और पांचवा है स्वीकृति। उपरोक्त 5 बातों को दीपक चोपड़ा जी ने लिखित जो किताब है लाइफ आफ्टर डेथ, उन्होंने उसमें से उद्धृत किया है। इसके साथ ही यह भी तैयारी रखें कि जब भी आप खुद एक विद्यार्थी बन जाए, जो हम खुद प्रज्ञावान हो, ज्ञानी हो, तो उसको सुने और उसकी बातों को माने। साथ साथ जो हम में कमजोरियां हैं उसको भी जाने, सीखते रहें और नेतृत्व प्रदान करने की शक्ति भी प्राप्त करते रहें और मार्गदर्शक भी बनना चाहिए। एनसी राम का कथन उन्होंने यहाँ पर कोट किया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। एनसी राम जी का कहना है कि जब आप पूर्ण शरणागति स्वीकारते हो, अपने स्व का निर्मूलन किया है और अपने हम की झूठी दीवारों को नेस्त नाबूद किया है, तो आप वही एक सत्य रूपी सत्ता के अधीन हो सकते हो, जो वही अविभाजित है, जो वही अदृश्य व्हील है, जिसे हम व्हील यानी सुप्रीम जो इच्छा हम कहते हैं वो है। जब हम ऐसी ही उच्च भावनाओं के साथ कार्यरत होते हैं, तब हम हमारे मन को आकाश की तरह खुला पाते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कुछ नया नया हम सीख पाते हैं और सीखने की यही कोशिश हमारी जिंदगी भर इस तरह से जारी रहती है कि जैसे हमने कोई मुकाम पा लिया हो और अब कुछ करना नहीं है, ऐसी भावना नहीं आती, यानी हीन भावना के हम शिकार नहीं बनते। सबसे पहले उन्होंने जो बात बताई उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण अच्छा दिया था हसमुख भाई ने कि चीजें तो उसका परिणाम गलत ही मिलेगा। एक बटन शर्ट का अगर हमने गलत लगाया है तो बाकी सारे बटन हम गलत ही लगाते जाएंगे। यह उदाहरण भी अच्छा है, व्यवहारिक जगत में इससे बड़ी सीख मिलती है। मुझे आज हसमुख भाई की इन बातों को आपके सामने हिंदी भाषा में प्रकट करने का एक मौका मिला। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर उनके लिए जो वक्त तय किया है उसके साथ में चलूंगा, तो फर्स्ट पार्ट के लिए धन्यवाद। आगे हम उनको सुनेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन भाई। और मैं निवेदन करूंगा हसमुख भाई से कि वे अपना दूसरा पार्ट करें। अर्चना जी हाईलाइट कीजिएगा उनको। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। Hello, can you listen? Yes, sir, you're audible. या यस हसमुख भाई, प्लीज बिगिन। Yeah. For further explanation, I would would refer to Deepak Chopra and NC Ram जो हिंदी में जो क्या है ना कि we have to totally and absolutely surrender ourselves. Now this process is a regular moment to moment process. At this very moment when I am speaking to you, I should be asking myself within myself, am I surrendering to whom? Or my ego? No, I'm not surrendering to my ego. I don't want to surrender to my ego. I want to surrender to my guru. I want to surrender to one absolute who is going to throw his ideas and his speeches through me. So let it flow from them through me to you. So it's a channel. So if that channel is constantly taken care of with the acceptance, that becomes our gift. And that gift is at every moment's gift. That open-mindedness to learn from one another, to understand one another person by person, to reconcile with our past and present. This is the most important part as after the age of retirement. Because after you retire, your daily mundane life is gone, and now your mind is free to dwell anywhere he wants to go. And he is always dwelling in the past. Say, I made this mistake, I did that. Forget about this. Understand your past, that it was a learning curve only. And if it was a learning curve, the moment given to you now is a golden opportunity for you. So to reconcile with your past and accept the past is a learning curve. To understand our present situation in the most positive manner. Because regrets will come in as the elders. Or for the youngsters also, it's the same thing. So in this case, it says that you have to start loving yourself. Loving yourself, not in a negative way, loving yourself in a most positive way, that जो अंदर बैठा है कोई, उसका ज्ञान आपको मिलना चाहिए. To understand our present situation in the most positive manner, and thus our present becomes our gift. Now, do we recognize this gift? This very moment, this is a gift for me. The opportunity given to me to speak to you is a gift for me. And am I using it rightly? Am I giving my true justice to the to the gift? Or that bends slightly, even in the slightest manner, that ego is still flickering its light. I would quote Linda Goodman here again. Linda Goodman was a very famous author who has written several books on astrology, numerology, lexigram, and spiritual healing. She quotes Socrates and says that no one can teach you anything. Socrates has said that no one can teach you anything. All an instructor can do is to help you remember. Remember what? What you already know. And so learning is remembering and refocus on what you know. Now here, remembering is not the mundane remembering of the ego, remembering of your own true original diamond self. That diamond within us is always shining. So remember that. And memory contains two more words. In lexigram, she is distorting all the words and says, memory contains me and more. That means in our memory, we have me and more and more. So what is me and more? My positivity, my creativity, all the positives of the life. Therefore, memory equals me, more, me, you. That means more you, more me, more you, more me. Therefore, stand out of the student's way and allow them to slowly but surely regain their knowledge buried in their subconscious memory. So, just like the dust on the mirror,
we have to clean the dust so that the mirror reflects exactly what we are. So that mirror is our consciousness. It should reflect what we are. So to reflect that, one has to work constantly, day in, day out, moment to moment, split of a second to split of a second. See, be totally aware. And now I go to Deepak Chopra's 7 rules. You know, there is a book written by Stephen Covey, which says that 7 habits of highly successful people. And I have created 7 habits of highly successful spiritual people here from Deepak Chopra's point of view. The number 1, know that you are going to identify your worldview at every stage of your personal growth. At every stage of our personal growth, do we realize that we are growing? Do we realize that we are regressing or progressing? So at every stage, we are going to identify our world view with every stage of personal growth. Second, accept that these identifications are temporary. So at everything, every moment to moment, we are changing. So the ideas which we have today, now at this moment, might change tomorrow, might change in the next minute. Because if I hear something better than this one, then it will change. So it says, accept that these identifications are temporary. One would never be truly oneself until one reaches nirvana. So up to the nirvana stage, we have to work hard. Work hard how? Intelligently hard, creatively hard, and successfully hard. So be willing to change your identity. Are we? I'm asking myself, am I prepared to change myself continuously? Change for better? Therefore, it is said that, the only constant in life is change. Change is a consistent, constant factor in our life, in the universe itself. So be willing to change your identity at every moment. And I would like to quote here, although I have not written in my type, you want to subject, you want to Taral Bhai. It says there is a KFC rule. KFC. Everybody knows the commercial KFC, but I'm talking about KFC in a different manner. K for know exactly what do you want and what do you have. KF. Find out if you are getting it or not. And C, change if you are getting it and change if you are not getting it. Change the method. So if you are getting it, change it to how to make it better. And if you don't get it, change the method to get it better. So that flexibility, but positive approach, don't defend yourself. At any given moment, when the change is required, don't try to defend yourself. In Gujarati, if you can say that, Ragasya Gada ni jem chalya je chile chile. Chile chile chalya jaun e maro jatiya swabhav bani gayo છે. So chile chile nathi chalo, navo raah banavo છે. We have to make a new way for our own self first, as a student, and then a new way giving as a teacher too. So accept all these identifications are temporary. One would never be truly oneself until one reaches nirvana. Third, be willing to change your identity at every moment and day in and day out. Flexible but positive approach. Don't defend your I. Most of the time we defend our I in ordinary conversations. That's why, there is a whole book written about the art of conversation. Here it says that at every given conversation, either we want to take over our subject, or we want to defend our own self. Which is just temporary, and we know that this is temporary. Fourth, allow your ability to quietly observe without judgment to replace the ingrained ideas you reach automatically. So the ideas which are coming to us automatically, it's a software of the past. They are coming. Allow that ability to quietly observe, just observe them, In the same way, you see, if I may give an example of a mother, she is always doing her work, but still in total observance is his child. But once the child knows that my mom is observing me, he would start behaving. In the same way, the moment your mind, your conscience will start observing the thought process will start changing itself without any effort. Effort, of course, would be required, but that effort will be so minimal
that he knows that, oh, now I'm being looked after or I'm being chased. So allow your ability to quietly observe without judgment to replace the ingrained ideas you reach automatically. So you don't allow any ingrained ideas to reach you automatically. It has to go through the filters of your acceptance. Before your acceptance, that filter should be, is it love? Is it harmony? Is it right? Is it good for all? Then it should come out. When you have an impulse to struggle, use that as an immediate signal to let go. And when you say let go, I would like to edit let God. You let go of your thought and let God take care of it. So only we have to add in a let go, we have to add D only. So it says use that immediate signal to let go and let God. Open a space for the new answer to unfold on its own. Supposing you plant a mango tree, you don't sit on the mango seed all the time and say, come on, grow, come on, grow, come on, grow. It's time to grow. It will grow on its own at its own time. In the same manner, our ideas, our thoughts, our aspirations, you've already started growing. Let them grow on its own and just cull the grasses around it. So when we cull that out, the natural flow of that tree would be there. So when you cannot let go, forgive yourself and move on. Forgiving yourself is the most important, best aspect of our life. Because when you don't forgive yourself, then you are hurting your own soul. To forgive is natural, should come out natural, and say, and be prepared to be forgiven. Harjivan Kalidas Mitra has given us a simple answer to that. It says that forgive and forget. Use every opportunity. This last seventh one is use every opportunity to tell yourself that all viewpoints are valid, every experience is valuable, every insight is insight of a moment of freedom. So if somebody gives us some different opinion to us, they are also valid. Accept it. That they, how and what is it? What does it validate for? And then try to analyze it and find out that yes, there should be some sense in it too. Because we are talking about here is a ball hanging in the sky at 360 degrees, over 360 degrees. The possibilities are innumerable. The possibilities are infinite. And that possibility depends on from which side the ball is being hit. So that depends on us. We don't wait for somebody else to push us to hit the ball. We have to find out and decide for ourselves exactly with an open mind, how can I proceed further, nearer and nearer to my nirvana. And before even reaching nirvana, you can say that how I can improve myself again and again and again, constantly improvement that can flourish in our society, in our friend circle, in our groups, where you can share your ideas, where you can put your ideas. And again, say in Gujarati, what they say is samvad and parisamvad, not vivad. We don't follow on vivad. We follow on samvad and parisamvad. So when there is samvad and parisamvad, then we are on the right track of our journey. Thank you. Thank you so much. And would invite immediately Jasuben to go on for Gujarati. Yeah, thank you. Please go ahead. કરણભાઈ ને ખબર છે કે અમને શું કે ખાલી પોઈન્ટ્સ જ આપેલા હતા, એટલે ઘણા બધા ટ્રાન્સલેશનમાં થોડો આમ તેમ ફરક પણ આવશે. અહીં આપણે હમણાં એમના કહેવા પ્રમાણે જોયું કે એનસી રામના પુસ્તકમાંથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જ્યારે પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે અહંકારને ઓગાળી, એટલે કે સ્વને ઓગાળીએ, ત્યારે તે પોતાની ઈચ્છા પ્રભુની ઈચ્છા સાથે મેળવી દે છે. કરીશે એકદમ વચન. અને ત્યારે એમને શરણાગતિની વાત કરી કે શરણાગતિ કોની? તો કે છે ઉચ્ચ અંતરાત્માના સ્તર ઉપર જ્યારે આપણે ગુરુદેવનો એ સંદેશ ઝીલવા માટે તૈયાર હોઈએ,
અને તેમનું સ્પંદન જ્યારે આપણા હૃદયના તારને ઝળહળાવે ને તે વખતે મસ્તક નમી પડે, તે સાચી શરણાગતિ. તો એના માટે શું જરૂર છે? તો કે છે એમના મંતવ્ય પ્રમાણે તો કોઈ પણ ક્ષણે કોઈ પણ કાર્ય વિનમ્રતાથી સહજ ભાવે કરવામાં આવે ત્યારે ખુલ્લા મનનો વધારે અને વધારે ઉઘાડ થાય છે. કયો ઉઘાડ? ભર પડે નવું જાણવાની ઉત્કંઠા અને દરેક વ્યક્તિને વધુ સારી રીતે સમજવાની તૈયારી. એમને સારી રીતે સમજવાની તૈયારી એટલે કે કોઈ પણ બધ વગર તેમને સ્વીકારવાની તૈયારી. બીજું કે પોતાના ભૂતકાળ અને વર્તમાન સાથે પણ સમાતા એક નવો દ્રષ્ટિકોણ આપણને આપે છે અને તેમાંથી જન્મતો એક જીવન પ્રત્યેનો નવો અનુરાગ આપણને મળે છે. આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિને સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણે જોવાનો ને સમજવાની તક આપણું ખુલ્લું મન જ આપણને આપી શકશે. અને આમ આપણો વર્તમાન એ જો સાચી રીતે આપણે સમજ્યા હોઈએ અને જ્યારે આપણે ભૂતકાળમાં ના ભમ્યા કરે અને ભવિષ્યકાળની ચિંતા ના કર્યા કરીએ તો આ પળને આપણે પકડી શકીએ છીએ. કેમ કે આ પળ જ આપણી મામૂલી ભેટ છે. કોલસાની ખાણમાંથી ચૂંટેલા હીરા. હવે લિન્ડા ગુડમેન ને સોક્રેટિસનો ઉલ્લેખ કરીને આ પ્રમાણે લખ્યું છે કે કોઈ તમને કાંઈ શીખવાડી શકતું નથી. શિક્ષક તમે જે જાણો છો તેનાથી તમને સભાન કરે છે. તમે આ બધું તમારું કેટલું જન્મો જન્મનું જ્ઞાન લઈને આવેલા છો, તો શીખવાનું જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું યાદ રાખવાનું. એકાગ્રતા, ફોકસ ઓન યોર ધ્યેય. તમારું શું ધ્યેય છે જીવનનું? ને અહીં તેમણે અંગ્રેજીમાં મેમરી શબ્દને પણ જુદો પાડ્યો છે. મી અને મોર. હું અને ઘણું બધું શું? ઘણું બધું મારા અચેતન મનમાં પડેલું છે. તેનો ઉઘાડ કરવાનો છે. પ્રજ્ઞાને પડકાર દેવાનો છે. ક્યારે આ બની શકે? જ્યારે મારું મન કોઈ પણ અંતરક વગરનું ખુલ્લું મન હોય, કોઈ પણ પૂર્વગ્રહ વગરનું ખુલ્લું મન હોય, ત્યારે જે દીપ પ્રગટી શકે. તો પછી ચાલો દીપક ચોપરાના 7 પગથિયા સુવર્ણ પગથિયાની વાત કરી, કે સુવર્ણ સીડીની વાત કરી. પેલું કે જીવનના દરેક તબક્કે તમારી માન્યતા એ જ તમારી ઓળખાણ છે. અને આપણને બધાને ખબર છે કે માન્યતા બદલતી રહી છે, તેમ પ્રતિપળે મારી ઓળખાણ પણ બદલાતી રહે છે. બીજું, આને સહજ સ્વીકારવું જ પડશે કે જીવનના નિર્વાણના અંતિમ પગથિયા સુધી આપણે એકત્વને પામી શકતા નથી. આ યાત્રા ઘણી લાંબી છે. ત્યાં નથી કોઈ સાથી, નથી કોઈ સગાથી. પાથ ઓફ અલોન ટુ અલોન. આપણો હું, ત્રીજું, આપણો હું ક્ષણભંગુર છે. કેમ કે તે સતત બદલાતો રહે છે અને ગરજતો રહે છે. હુંકારનો અહંકારની ગરજના બહુ મોટી છે, સીના જેવી છે. એ ગરજતા હુંને આપણે ઓળખી શકીએ છીએ કે આપણે એમાં જ રાચ્યા કરીએ છીએ? ને સકારાત્મક રીતે હું ને તુંમાં ફેરવવાનો છે. તું, ગુરુદેવ તું, પ્રભુ તું. હું ને તુંમાં સરકવા દ્યો. એ પરમને પામવો હોય તો એ તુંને ઓળખો. ચોથું, પૂર્વગ્રહોથી આપણે સતત ઘેરાયેલા છીએ. તેને ઓળખવાની શક્તિ આપણી અંદર છે, પણ આપણને નથી બદલાવું, નથી એને ઓળખવો. તો તે માટે આપણી નિર્ણય શક્તિને આપણે વધુ મજબૂત કરવી પડશે. પાવર ટુ ચેન્જ યોરસેલ્ફ, પાવર ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન. વિવેકનું પહેલું પગથિયું, વિવેકની ફૂટપટ્ટી આપણી સાથે રાખવી પડશે. કોઈ પણ સમયે તમારા સાચા ખોટા મંતવ્યોને સાચા પૂર્વ કરવાનો હઠાગ્રહ છોડો. જ્યારે પણ મારા હુંકારનો ઠાલો બચાવ હું કરું, ત્યારે એક જ શબ્દ યાદ કરો, પ્લીઝ લેટ ગો.
કોને લેટકો કરવાનું છે? તમારા અહંકારને. તમારા અહંકારને ઉગાડો તો ક્યાંકથી પ્રેરણાનો ઉઘાડ થશે, એક નવું તેજ કિરણ મળશે જે તમારા મહિલાને પ્રકાશિત કરશે. જ્યારે આપણે કંઈ જતું નથી કરી શકતા, એટલે કે લેટ ગો નથી કરી શકતા, તો તે માટે ઘણા વખત સુધી અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ, પસ્તાવો કરતા રહીએ છીએ. તો આપણે આપણી જાતને બ્લોક કરી નાખીએ છીએ. આપણી જાતને પણ આપણે માફ કરવાની છે. અને જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, ત્યાંથી આગળ વધો. પણ ઊંઘતાને જગાડાય, જાગતાને ના જગાડાય. તો બીજું દૃષ્ટિકોણ એ પણ છે કે જો તમારી ભૂલ સમજાણી હોય તો બીજી વખતે એ ભૂલ ન થાય, બીજી વખતે આ પશ્ચાતાપમાં ના ડૂબકી મારવી પડે, તે માટે ઝોલા વગરનું જાગૃત જીવન. અને જીવનની દરેક ક્ષણ, દરેક પળ, દરેક અનુભવ ખૂબ 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 મૂલ્યવાન છે. પછીથી તેમણે કીધું કે આંબાનો ગોટલો આવ્યો હોય અને તેની પાસે જ બેઠા રહીને જો માળા કર્યા કરીએ કે ઉગ 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 ના ઉગે, એને બધું જ પ્રોપર વાતાવરણ મળે, તેજ, પાણી, આકાશ, વાયુ બધું જ મળે, ખેતર, ખાતર, અને પોતે સ્વયં ખીલી ઉઠે. અને વર્ષો વર્ષ તમે એની કેરી ખાઓ. ગુલાબની કળી, આખી કળીને જો ચૂથી નાખો તો એ નહીં ખીલે, એને ખીલવા દો. તમારી અંદર એટલું બધું પડેલું છે, એ વાજિંત્રને તમે તૈયાર રાખો. ખબર નથી ક્યારે ગુરુદેવની આંગળી પડે ને એ ઝણકારી ઉઠે. તો આ સાથે હું અહીંયા પૂરું કરું છું. Thank you so much. Harshavadan bhai, please go ahead with your Hindi version, sir. ये हो रहा है क्या? ठीक है, ये अनम्यूट हो गया मैं. हाँ जी, अनम्यूट हो गए आप. और हर्षवर्धन भाई जब अपना फिनिश कर लेंगे, when he is finished, you can all ask any questions or also add to the subjects whoever are present here. Thank you. Please go ahead, sir. ओपन माइंड की इस बात का जो दूसरा पहलू है वो काफी संजीदा भी है और इतना प्रेरणादायी है कि जिसका हम दोहन करते रहे आज रात को और आने वाले 2-3 दिनों तक, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो परिवर्तन आएगा, इसमें पूरा विश्वास है मुझे. और उन्होंने जो कथन किया है, जिसका ब्यौरा दिया है, वो दो ऐसे हमारे आधुनिक जमाने के ऐसे लेखक भी कहे जाते हैं और चिंतक भी है, जैसे कि दीपक चोपड़ा जी. और उनकी बातों को उन्होंने जो आयाम के साथ बताया है, कुछ 6-7 पॉइंट्स उन्होंने लिए, उसकी बात मैं बाद में करता हूं. पहले जो उन्होंने अपने सेकंड पार्ट में जो बात बताई है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारे पास जो विनम्रता है उसको बरकरार रखें. किसी भी क्षण विनम्र अगर नहीं बन रहे हैं तो उसको आप खुले मन से देखें कि क्या हमारी विनम्रता कार्य कर रही है. तभी हम हमारे खुले मन का आविष्कार निसंदेह कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम सीख सकेंगे, क्योंकि सीखना हमारी ही फितरत है. और जो भी सीख कर हम पाते हैं वो हमारा हक है, पाना है हमें. और दूसरे जो व्यक्ति है उससे भी ज्यादा अच्छी तरह समझना भी हमारे लिए आसान अगर होता है तो उसके लिए प्रयत्नशील होना है. हमारे भूतकाल एवं वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको स्वीकारना है, उससे दूर नहीं भागना है और उनसे ही कुछ सीखना है. और हमारी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो बड़े ही सकारात्मक स्वरूप से हमें स्वीकारनी है. हम कभी कभी गलतफहमी कर देते हैं, ये गलतफहमी में नहीं रहना है. सकारात्मकता रखनी है, स्वीकृति रखनी है और वर्तमान परिस्थिति में ही जीना. No, I don't want to hear it. और आगे लिंडा गुडमैन की जो उन्होंने बात बताई, एक दूसरा जो नाम हमारे सामने है तो लिंडा गुडमैन. हसमुख को मैं सही नाम बोल रहा हूँ? गुडमैन, GOODMAN नाम है. मैंने फर्स्ट टाइम सुना इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Yes, yes. लिंडा गुडमैन जिन्होंने राशि चक्रों के बारे में किताब लिखी है, वे सोक्रेटिस का एक बयान बताते हुए कहती हैं कि आपको कोई भी चीज सीखनी है तो कोई और दूसरा नहीं सिखा सकता. कोई भी इंस्ट्रक्टर हो वह सिर्फ आपकी मदद कर सकता है.
तो ये भी अच्छी बात बताई। फिर क्षमता की बात आती है कि आपकी क्षमताओं का जो कौशल है उसे किसी भी नतीजे से तोलमोल करने के बजाय जो भी आपके विचार है उन्हें सिर्फ देखें। यानी तोलमोल की बात तो जाने दीजिए, आप स्वयं ही उन विचारों तक पहुंच जाएंगे। जैसे मुझे एक बड़ा ही पेचीदा एक 3 शब्दों का एक लहजा याद आता है, तोल मोल कर बोल। तोल मोल कर बोल वो एक ऐसा लहजा है कि जिसे हम बोलने के लिए भी कहते हैं कि भी तोलना और मोलना है। और वही बात है हमारे लिए सीखने की भी होती है, और हम याद करने की बात कहते हैं तो वही बात आती है हमारे सामने। और जो भी आप हम जानते हैं उसी को ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उससे ही आगे बढ़ाना है। अब बात आती है संघर्ष की। क्या हम सोचते ऐसा हो सकता है? कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है? नहीं होता। हमें संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने की इच्छा जब आके तो बिना सोचे समझे संघर्ष ना करें, कुछ लेट गो की भावना रखे, ऐसा संकेत अपनाए जो लेट गो का है, और अपने आप ही एक अलग सा जवाब जो सामने आता है उसके लिए अवकाश स्थापित करें। एक जवाब आने दीजिए अंदर से। लेट गो अगर आप करते हैं तो जवाब आएगा, जरूर आएगा। अगर आप लेट गो नहीं कर सकते हैं तो सॉरी, मैं मोबाइल जरा मेरा, अच्छा ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ता हूं। जब आप लेट गो नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को माफ करते जाइए। बहुत बड़ी बात थी, संजीदा बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात, और आगे बढ़ते जाइए। जो भी ऐसी तक प्राप्त हो जब आप अपने आप को कह सकते हो कि हर एक सूचितार्थ स्वयं ही आधिकारिक है, हर एक अनुभव मूल्यवान है, और हर एक अंतर्दृष्टि मुक्ति की क्षण है। ज्यादा से ज्यादा सुने। मन अगर विक्षेप कर रहा हो तो उसे परे रखें, और खुद की निष्ठा को बदलता हुआ देखे और समझे। ऐसी स्थिति का सामना करने की बजाय शांत रहे, बचने की कोशिश ही ना करे। अब उन्होंने स्मृति की बात बताई है कि स्मृति में 2 शब्द निहित होते हैं, एक है मेरा और अधिकतर मेरा। इसलिए मेरी स्मृति जो है उसका हिसाब हम करने बैठ जाते हैं, जैसे कि मेरा ज्यादा तो आपका भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी नुमा चलन से ऊपर उठते जाइए, ताकि अचेतन अवस्था की स्मृति में निहित जो ज्ञान है वह आहिस्ता आहिस्ता प्राप्त हो सके। अब चलिए, जो दीपक चोपड़ा जी बात बता रहे हैं उस पर मैं गौर कर रहा हूं। और सबसे पहले उन्होंने बताया, यह जान लीजिए कि आप आपके वैयक्तिक विकास के पहलू दर पहलू को आपकी खुद की दुनिया के ढांचे में देख सकते हैं, किसी और की दुनिया नहीं, खुद की दुनिया के ढांचे। और पहलू दर पहलू आपको ये देखना होगा, जैसे परत दर परत हम उसे उकेरते जाते हैं, उसी तरह। अब दूसरी जो बात बताई है वो है पूरी गंभीरता से स्वीकार करने की, कि पूरी गंभीरता से आप स्वीकार करें कि यह जो भी प्राप्त हो रहा है वह सिर्फ अस्थाई है, इम्परमानेंट, स्थायी नहीं है। निर्वाण की स्थिति अगर प्राप्त हो जाए तब तक स्वयं को सिर्फ अस्थाई ही समझे। फिर तीसरी बात बताई, हर एक क्षण आपकी जो पहचान है वह बदलती रहती है, दिनों दिन यह परिवर्तन होता ही रहता है। अपने आप को संरक्षित करने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि यह भी अस्थाई है। यानी अगर आप अपने आप को संरक्षित पाते हैं तो वह भी अस्थाई है। फिर चौथी बात बड़ी ही गहन बात है, आपकी जो क्षमताएं हैं, जो आप तार्किक स्वरूप से जानते हैं, और उसी में ही आप अपना जो अनुमान लगाते हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचने का अनुमान होता है, लेकिन उसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य न हो। जो भी निहित विचार है उसके स्तर पर ही आप बिना प्रयास ही पहुंच जाते हैं। यानी आपको प्रयास नहीं करना है उस स्तर पर जाकर। जब भी आपको, पांचवा जो
स्तर जो उन्होंने बताया, 5वां मुद्दा बहुत ही उसके साथ आगे चलता है, लेकिन ये तब्दीली या चेंज लाना काफी मुश्किल महसूस हर एक को होता है, क्योंकि उसमें संघर्ष है। तो बताते हैं कि जब भी आपको संघर्ष में स्थिति महसूस हो तो लेट गो का सूत्र तो अपनाइए। नए नए जवाब तलब करने के लिए उसे अवकाश प्राप्त होने दें। अगर आप लेट गो नहीं कर सकते तो क्या होता है, आप अपने आप को भी माफ नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को माफ करते जाइए। फिर जो चलन चलता है उस चलन में मत अपने आप को खुपाइए। गुजराती में उन्होंने एक अच्छी कहावत बताई, रगसिया गाढ़ानी जेम चाल्या करे छे। रगसिया गाढ़ानी जेम। हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना है। हमें एग्जैक्टली हमारी जो मेथड है वो भी बदलना है। जब हम आम बोते हैं, आम के वृक्ष को बोते हैं, तो इतनी इंतजार करने की हमारी जो जिज्ञासा रहती है वो बनी रहनी चाहिए। हमें इंतजार करना है। समय के साथ जो अवकाश और समय दोनों के साथ हम चलते हैं तो वो जिज्ञासा बनी रहती है। उसमें कभी भी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर अपने आप को माफ भी करते रहना है। अगर गलती करते हैं तो माफ करते जाइए। एक हमारे बड़े ही गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के जो हमारे कार्यकर बड़े हो गए गुजरात के, वो हरजीवन कालिदास मेहता की बात उन्होंने बताई। वो समझाते थे कि अगर हम माफ करते हैं तो हम काफी निश्चिंत हो जाते हैं, हम स्पष्ट हो जाते हैं। अंदर से हम सुख का एक प्रमाणभूत जो आईना बनता है उसमें हम अपने आप को देखते हैं और हमने अपने आप को सुखी बनाते हैं। तो ये बात उन्होंने बताई। जैसे कि शरणागति की बात, अगर हम शरणागति के बाद किसी के साथ हमारा संवाद होता है तो संवाद होने दीजिए, परिसंवाद भी होने दीजिए। अगर एक इंसान बोलता है, एक वक्ता बोलता है और दूसरे सुनते हैं, तो ऐसी भी हमारे पास जो ज्ञान की शक्ति है, जो समझने के लिए हमारा जो कार्यक्रम बनता है संवाद और परिसंवाद से, तो वो होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? विवाद। विवाद मत होने दे। शरणागति भी होने दे और विवाद न होने दे। बड़े ही सुकून से, बड़े ही अजीब तरीके से कुछ बातें हमारे सामने आती है जो आज के एजुकेशन के लिए काफी जरूरी है। बड़ा ही एक सूत्रात्मक उसमें से काफी हमें परिवर्तित कर ऐसा उन्होंने एक शब्दांश यहाँ दिया है। वो है, कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। आपके अंदर जो कुछ है उसे सिर्फ बाहर लाना है। ये एजुकेशन की बात हुई। जो भी अंदर है उसको ही बाहर लाना है। आप सिखा तो सकते नहीं हो। परम को पाना ही तो हूं की पहचान है। अगर आप उस तरफ आपकी दिशा रखते हैं, उस तरफ आप बड़ा ही प्रयास करते हैं, अपनी गतिविधि बनाए रखते हैं और हूं को अगर पहचान लेते हैं, तो आपकी गति सिर्फ उसी तरफ ही रहेगी जो परम को हम प्राप्ति के मार्ग के लिए पसंद करते हैं। फिर एक पेचीदा बात भी बताई कि जो सोया है उसे जगाया जाता है, लेकिन जो ढोंग करता है, जो सोने का कुछ मतलब कि नाटक करता है, उसे नहीं जगाया जाता। तो इस तरह से ये उन्होंने अच्छी बातें हमारे सामने रखी है। खुला मन जो है वही एक ऐसा विस्तृत मन बनता है कि जिसमें जो मैं कहूँ वो भी मेरा है, वही सही है, या जो भी सही है वही मेरा है। तो ये दोनों बातों को समझना है कि जो भी मैं कहूँ, जो भी मेरा है वही सही है, या फिर जो भी सही है वही मेरा है। इसीलिए हर वक्त हम हमारा ही सही है ऐसा विचार संजोकर आंतरिक रूप से उसे बढ़ावा ही देते हैं, यानी उसे बढ़ावा नहीं देना है। यह सिर्फ हमारा ख्याल होता है। और इसलिए उन्होंने लिंडा गुडमैन की जो बातें, जो उसकी किताब थी, उसको उन्होंने बड़े ही अच्छी तरीके से यहाँ पर रखा है। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जो हमारे खुले मन की बात को एक परिपाटी के स्वरूप से, यानी बड़े ही निहत ऐसे तरीके से वो हमारे लिए कार्य करता है
कि हम कब खुले मन से कुछ बातें करते हैं तो हमारी जो हर एक दैनिक जो हमारे कार्यकलाप है, क्रियाएं हैं, उसको देखना होगा। सिर्फ किताबों पर भरोसा नहीं रखना है, अपने आप को भी देखना है और इस तरह से देखना है कि जो सही है वो हम खुले मन से हमेशा अपनाते जाएंगे और इसलिए हमारे मन को उस तरह से ही संजोगे, उस तरह से उसमें जो बातें बनती है उसे देखेंगे और उसे गलत दिशा में कभी भी नहीं ले जाएंगे। तो ये बातें हमारे लिए काफी अहम है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसका हम ये विषय के साथ हम उसके जोड़ सकते हैं, क्योंकि मन के लिए कई लोगों ने, कई दार्शनिकों ने, कई लेखकों ने कई बातें लिखी है और थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये हमारा साहित्य है, वो इतना बड़ा ही विशाल महासागर है जिसे हम गोते लगाते जाएं, मन की बातों को संजोते जाएं, मन की बातों को जानते जाएं, तब हम मन की उसी एक ऐसी कुछ स्तर की बातों को जानेंगे कि जो शायद अंदर तो है लेकिन उसे हम बाहर नहीं आना देते। तो बाहर आने का ये त्रिवेणी जो कार्यक्रम है वो हमें बाहर लाता है, इसमें हमें वो संजोता है, इसमें हम एक फूल के साथ दूसरे फूल को जो पिरोए जाते हैं और एक माला बनती है, तो माला का जो सूत्र है वो सूत्र हम बन जाते हैं। तो उस तरह से हम उसको संजोते हैं। तो मुझे काफी आनंद हो रहा है आज, कई दिनों के बाद या महीनों के बाद मैं कह सकूं कि मैं त्रिवेणी में जुड़ा हूं। बीच में काफी हम मशगूल थे हमारे ऐसे ही कार्यों के साथ। तो और आज आपके देखा मैंने संख्या 44 तक चली गई और कई लोग उसमें जुड़ गए और जो नए थोड़ा सा हमारे कि काफी और लोग बहुत बात आपने मुझे सुना, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हसमुख भाई आपको मैं प्रणाम करता हूँ, जसू बहन आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आपने बहुत अच्छी गुजराती में समझाया और बड़ा ही सुकून महसूस हो रहा है ऐसी बातों को सुनकर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। For थैंक mind, I would like to add two steps. यू। या No, don't let your mind be a trash can, and don't let your mind be a stepping stone for somebody else in a wrong way. बोलते हैं कि पगरखू मत बनाओ जी, मन को, पगरखू मत बनाओ। कोई आवे कचड़ जाएगा नहीं, आप खुद विचार करो क्या करना है, क्या कैसा करना है, आपकी सोच कैसी है, बाद में चलो। Otherwise, not like a flag which goes on flying according to the wind. You have to have your some specific ideas यस सर। and work on that ideas to make it better and better. थैंक यू अशोक भाई और जसुबेन, आप दोनों को बहुत ही बढ़िया आपने कहा और मैं तो समझ ही सकता हूँ। आई कैन ओनली इमेजिन व्हेन बोथ ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग फुल फ्लेज्ड फॉर थियोसॉफी, डेफिनेटली पीपल वुड हैव जस्ट फेल्ट वंडरफुल एंड learning process would have been so smooth and sweet, just like you speak. Any questions? I think otherwise wants to say something. Congratulations. Anyone else? Congratulations to हसमुख भाई देवानी, जसुबेन देवानी और हर्षवर्धन शेख। आज का विषय सुन के बहुत आनंद हुआ और रोमांचित हुए। खास तो जसुबेन देवानी गुजराती में पहली बार हमने सुना और उसका नाम भी पहली बार सुना। बहुत रोचक तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन था। हर्षवर्धन भाई शेख जो तो हमारा जीटीएफ का प्रेसिडेंट है और अभी अभी बोवाली से भी अच्छी तरह से उसने स्पीच दिया था और उसकी भी हिंदी सुन के हम बहुत हर्षित हुए। खुले मन की बात यह है कि थियोसॉफी का सदस्य बंधियार मन का हो ही नहीं सकता। थियोसॉफी का सदस्य खुला मन का ही होता है। खुला मन वाले जो आदमी है वही यूनिवर्सल ब्रदरहुड और धर्मों का समन्वय की बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए थियोसॉफी के लिए ये तो बहुत बेसिक बात है कि ओपन माइंड रहना चाहिए। सुवर्ण सीरीज गोल्डन स्टेज का दूसरा ही स्टेप है क्लीन लाइफ एंड ओपन माइंड। अपना मन खुला रखना चाहिए। खुला मन वाला आदमी वो आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकता है और खासतौर पर यह भी कहा कि मृत्यु के बाद भी ये खुला मन वाला आदमी अपनी प्रगति कर सकता है। और बहुत बताया कि स्व जागृति, इच्छा शक्ति, विवेक और स्वीकृति, वो इसी बातों से हम खुला मन का रह सकते हैं। भगवान कृष्ण भी खुला मन का था। इंद्र की पूजा उसने बंद कराया, वो परंपरा में नहीं बना और गोकुल वासियों को ये पूजा बंद करा के गिरिराज की पूजा चालू कराया।
तो भगवान कृष्ण भी ऐसा रचनात्मक कार्य किए। हमारा मन, रोहित मेहता ने भी एक किया था, कहा था कि हमको हमारा मन को बंधियार नहीं रखना चाहिए और खुला मन रखना चाहिए, और खुला मन भेद बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, वो समन्वयवादी प्रकृति का होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बेसिक बात आज सुन के बहुत प्रसन्नता हुई, आनंद की। सबका, सब वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। यस, और कोई कैच कहना चाह रहा हो? હરવર્ધનભાઈ છે ને તે આપને બધો અનુભવ, આપનો શિક્ષકનો બધો અનુભવ અને બધી ડિગ્રીઓ જોઈને અમારા તો છક્કા છૂટી ગયા હતા. તમે બહુ જ સરસ રીતે હિન્દીમાં બધાને સમજાવ્યું. Thank you. Anyone wants to add anything, sir? शैलेश जी, मैं मारी जात ने मैं પોતાને ડિગ્રી આપી હતી. कुंदन जी, anyone would like to add something? I would like to add something. Yeah, please. I was reading a book. It's called Many Lives, Many Masters. It's about reincarnation. It's about going back in life. And people go to psychiatrists, spend so much money in the present life to clear the past lives, what they've made mistakes and what they, as we were like today, it made me realize that you are holding on to so many things in your life which never came out and you died. So your soul is collecting all the dust, as HASMUKH-Bhai says, clear the glass and see the clear vision of yourself. So I was thinking, my God, if we did that while we were alive, we wouldn't have to go to psychiatrists and try to get all the declutters of our heart, of our mind. Because our soul carries from God knows how many lives. So this session made me really aware that keep the open mind and express your feelings. So it was very interesting for me. Thank you. Wow, that was a really wonderful addition. Thank you for that. And just keep joining and give your valuable thoughts. Anyone else, please? Can raise hand. Yes, तरल जी, सबसे पहले तो कही सकूं कहीं थोड़ું. हाँ, इंदिरा जी તમે કહીએ, उसके बाद आभा जी आप बोलिएगा. हाँ, ठीक. इंदिरा जी बोलिए. ત્રણે ત્રણ વક્તાનું વક્તવ્ય સાંભળીને એટલી બધી મજા પડી ગઈ કે ખુલ્લા મનની જે વાત કરી. આપણે ઘણીવાર એક પ્રશ્ન થાય કે ગ્રેસ તો ઉપરથી ગોળથી બધાયને સરખી જ મળે છે, સરખી જ આવે છે, છતાં આપણે ઝીલાતું કેમ નથી? કારણ કે આપણું પાત્ર બરાબર નથી. ઘણીવાર આપણું પાત્ર આડું પડેલું હોય, ઘણા વખત પાત્રમાં છિદ્ર હોય અથવા તો છલોછલ ભરેલું. આ ટ્રાફિકો, વિચારોના ટ્રાફિકથી જામ છે આપણું. એટલે આ ખુલ્લા મનની જે વાત કરીને, મન એવડો મોટો સબ્જેક્ટ. આમ હર્ષવર્ધન ભાઈએ કીધું એમ કે સાગર જેવડો આ વિષય છે ને, એટલે જ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે કે ઇન્દ્રિયાણામ મનસ્સાસ્મિ, કે હું ઇન્દ્રિયોમાં મન છું. ભગવાને વિભૂતિ કહી દીધી મનને. એટલી મોટી કિંમત છે મનને. બહુ મજા પડી ગઈ ભાઈ. આમાં તો બોલીએ તો બહુ મોટું થઈ જાય, મોટી સમય જોઈએ, પણ હવે હું આટલું જ બોલીશ. Thank you so much, Indra ji. Thank you so much. Yeah, आभा जी बोलिए. अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, कर लिया मैंने. डिवाइन इवनिंग टू ऑल द मास्टर्स हु आर प्रेजेंट हियर. सभी को मेरा बहुत बहुत ब्रह्म वंदन. जो जासू बहन ने बोला वो मुझे सभी का मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैंने सुना उसका जो मेरे पिकअप पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ. सीखना और याद रखना दोनों जरूरी. अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, उसको आप कितना याद रख पाते हैं, बोथ आर नेसेसरी विद पॉजिटिव एटीट्यूड. विदाउट वो मैं बताऊंगी बाद में. हर्षवर्धन सेठ भाई ने भी यही बोला था. दूसरा, ओपन माइंडेडनेस जब तक नहीं रहेगी तब तक आप कोई नई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. लर्निंग में ओपन माइंडेडनेस बहुत जरूरी, अदरवाइज वो फिर लर्निंग का फेज नहीं होता है. विद एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मुझे नहीं आता, बट आई वॉन्ट टू नो. ये जो एक स्टेप है कि आई डोंट नो बट आई वॉन्ट टू नो. तो जब तक ये नहीं आएगा
जब तक मैं ये सोचूंगी कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर वो लर्निंग मेरी हो ही नहीं पाएगी। वो जो एक फेज है लर्निंग का, मुझे नहीं आता है, यहीं से शुरू होता है, भले ही आपको आता हो। और इसका जो एक पॉइंट इन्होंने दिया, विनम्रता, वो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को लेने के लिए विनय बहुत जरूरी है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद धर्म सुखम। तो वो विनय जब तक नहीं आएगा, जब तक आप हम्बलनेस नहीं आएगी, आप कोई भी चीज आप ले नहीं सकते हैं। वो चीज बहुत जरूरी है स्पेशली सीखने में। और ये चीज मैं अपने से छोटों से भी सीख सकते हैं। ये मत सोचो कि ये छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। एज डज नॉट काउंट एट ऑल। कहीं से भी आपको सीखना मिल जाए तो आप सीखिए। तो यहाँ पे वो विनय बहुत जरूरी है। फिर दूसरे, आपने हर्षवर्धन सेठ जी का बड़ा अच्छा लगा कि सीखना हमारा हक है और हमें उसके सीखने के लिए प्रयत्नशील हक है। ये चीज जो है, ये बहुत अच्छी चीज है। एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये दोनों कहा। फिर लिंडा गुडमैन का आपने जो बताया कि आप कोई सीखा नहीं, ये बात सब कर सकता है, लेकिन सीखना आपको ही पड़ेगा कोई भी चीज, ये बहुत जरूरी है। और लेट गो, ये जो होता है ना, खाली मैं ही सही हूँ, ये भी चीज आपकी बाधक बनेगी कहीं ना कहीं लगे। ओपन माइंडेडनेस बहुत जरूरी, तभी आप हर चीज कर पाएंगे। और निर्माण प्राप्ति तक जैसा होता है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ये जो चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जी जी, आप परमानेंट हैं, बाकी कोई चीज परमानेंट। यू आर द सोल, आप परमानेंट है, आप कॉन्शियस, ये जरूरी है। तो और एक बुद्ध का ये भी, अपो देवो भव, ये बुद्ध ने भी कहा है, अपना दीपक करिए। कोई आपको कर नहीं सकता है, अपना रास्ता खुद चुनिए। आप लर्निंग करिए, सीखिए, समझिए, लेकिन रास्ता आप अपने हिसाब से चलिए। ये चीजें कुछ पिकअप पॉइंट थी जो मुझे ठीक लगी। जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अंदर, हाँ हाँ, कहिए कहिए, सॉरी, कहिए कहिए कहिए। नहीं बस ठीक नहीं, है। मुझे लगा आप समाप्त कहिए ना, कहिए। ये जो चीज है कि सोए हुए को जगा सकता है कोई, लेकिन जो नाटक कर रहा है उसको आप कैसे जगाएंगे। कोई सो रहा है उसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन कोई नाटक कर रहा है उसको आप जगाएंगे कैसे, पहले ये बताइए। ये बहुत अच्छी चीज है। जो नहीं जानता है उसको आप सिखा सकते हैं, लेकिन जो जानना नहीं चाहता उसको आप नहीं। बहुत बढ़िया अभा जी, बहुत मजा आ गया। आपने पूरी चीज का एकदम ब्यौरावार वर्णन कर दिया और एक बार और रिवीजन करवा दिया। यस, विमल जी, फाल्गुनी जी, कोई और कहना चाहते हैं? मुझे बोलना है। हाँ, बोलिए फाल्गुनी जी। मेरा नाम शिराली है। मैंने सॉरी इसमें नाम चेंज नहीं किया। शिराली सीखना वो पड़ेगा। बोलिए। हसमुख अंकल, इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक नॉलेजेबल क्लास टुडे। मैं ऐसा क्लास आप और करो, ऐसा चाहती हूँ। और जो मुझे KFC वाला जो है, नो योरसेल्फ, राइट, फिर फाइंड आउट कि क्या गलती करते हो और फिर चेंज करो। जो चेंज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो KFC वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। पर क्या होता है, एक क्वेश्चन है आपके लिए। कभी कभी लाइफ में हमें मालूम होता है, हम चेंज भी होते, पर सर्टेन हम फैमिली में कोई रिश्ते में कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते, चाहे हम सही हो फिर भी हम उनको बोल नहीं पाते। तो वो तो हम कैसे ओपन माइंड हुए? तो ओपन माइंड तो नहीं हुए उस वक्त। हाँ, हमने उनकी रिस्पेक्ट की, हमने सहन किया, हमने सेक्रीफाइस किया, अपने आप को उनके साथ एडजस्ट किया। तब कैसे ओपन माइंड बनेंगे हम? चाहे छोटे हो, बच्चे भी हो सकते हैं। Be more humble. ऐसा नहीं है। हाँ, कहिए कहिए, हसमुख ही जवाब दे रहे। Be more humble again. Humbleness will always work to shine out. Be humble and present your point of view in a very humble way. ओके, पर फॉरगेट करते हैं, हम्बल बनते हैं, एडजस्ट होते हैं, सब कुछ करते हैं, पर दुख तो हमें ही लगता है ना, क्योंकि हम देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, पर आ जाता है कभी कभी। तो क्या करना चाहिए? Let go and let God. Let go and let God. ये मेरी थियरी है, मैं I don't know everything. एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि
जैसे 9th इंटरनेशनल योगा डे गया है ना, तो जैसे हम योगा करते हैं तो ये टेक फ्यूचर इन, होल्ड द प्रेजेंट एंड पास्ट को जाने दो। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो जाने देते हैं तो अच्छा है, फ्यूचर का सोच के उसको जाने दो, वो अच्छी बात है, समझ में सब कुछ आता है। पर फिर भी वो के लिए जो माइंड की कॉन्शियसनेस है ना, लाइक एवरी सेकंड की हमें कॉन्शियस रहना है कि हमें अच्छा बिहेव करना है, गुरु को फॉलो करते, गुरु जैसा बनना है, लेकिन गुरु को फॉलो करने में कभी कभी सेकंड भर भी परिस्थिति में चूक हो जाती है। एक बात और कहूं मैं, शायद आपकी आप जब कहते हो ना जाने दो, वो जाने दो कि स्टेज में आपका माइंड सेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई नो बेटर एंड ही नोज समथिंग लेस। You don't feel yourself to be better than somebody else. बहुत बढ़िया बात बोली। So जाने दो कैसे कि go God, give him more light, throw that light on her, let him receive the light. तो बनेगा ऐसा, otherwise you think yourself now I'm right and he's wrong. भगवान इन्हें उसको ज्ञान दो, मेरे को ज्ञान मिल गया, नहीं ऐसा नहीं, लेवल टू लेवल होना चाहिए। और लेवल टू जब लेवल टू लेवल होगा ना, तब you are creating an atmosphere where she would or he would open up his point of view. Wonderful. I hope आज सुबह में सॉरी मैंने अभी आपको सुबह में एक मैंने रीड किया स्लोगन कि you don't need to hide your feelings and when you are hiding your feelings the feelings are wrong. तो हम जब अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं तो कुछ ना कुछ गलत होता है फीलिंग्स में, डर के मारे कुछ ना कुछ को जो भी हो, तो फीलिंग्स तब ओपन माइंड बने। हसमुख अंकल कहेंगे ये बच्ची तो बहुत क्वेश्चन करती है। नहीं आपने क्या नाम बताया? श्री एवरीबॉडी इज सॉरी कैरी हो ना, क्या सवाल? नहीं आप प्रश्न तो बहुत बढ़िया पूछ रही हैं और उसका उत्तर भी सुन के अमल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और हसमुख भाई और कुछ कहना है इस विषय में? एवरीबॉडी इज रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर. They have developed their own propensity throughout a lifetime. So, you can't change them immediately. So let them do that way. At least you can say forgive him. Not only forgive him, but Gayatri Mantra का जो last phrase है कि उसको प्रकाश दो, मेरे को प्रकाश दो. Give me that light so that I can understand him and give him a light so that he can understand me. तो गायत्री मंत्र का उपयोग करना चाहिए. Yes. We are asking light for everybody. तरल जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सुषमा श्रीवास्तव। आप बोलिए सुषमा जी। हाँ, बहुत अच्छा व्याख्यान था, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि ये मुक्त मन में बाधाएं क्या हैं। हम पहले उन बाधाओं को देखें। दो चीजें मुझे समझ में आई कि जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, जो प्रेजुडिस माइंड है और जो हमारी कंडीशनिंग है। पहला प्रेजुडिस माइंड और दूसरा कंडीशनिंग। जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि हमारे मन में 10,000 साल तक के संस्कार कंडीशनिंग के रूप में रहते हैं। तो और ये कंडीशनिंग बनाता कौन है? ये कंडीशनिंग हमारा परिवार बनाता है, देश बनाता है, हमारी जाति बनाती है, हमारा समाज बनाता है, हमारा देश बना। तो ये जब हम इतना डीप रूटेड थॉट हमारे बचपन से हमें बोया जाता है तो इतनी कंडीशनिंग मजबूत हो जाती है। तब प्रश्न उठता है कि हम इस कंडीशनिंग को तोड़ें कैसे। अभी जैसे एक मैडम ने प्रश्न किया था कि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ लेकिन बोल नहीं पाती, तो प्रश्न ये उठता है कि ये पहले से हमने एज्यूम कर लिया कि हम सही हैं। हम ये कैसे एज्यूम करें कि हम सही हैं? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरा जो समझ रहा है उसका एलिवेशन का वो उतना इवॉल्व है, वो वैसी बात कर रहा है। हम जहां तक इवॉल्व है हम वैसी बात कर रहे हैं। तो ये भी हमारी कंडीशनिंग है कि हम जो सोच रहे हैं लेकिन दूसरे की फीलिंग हर्ट ना हो, तो हम यही गलत सोच रहे हैं कि हम सही सोच रहे हैं। तो ये भी एक कंडीशनिंग है। और सबसे बड़ी कंडीशनिंग धर्म की होती है। हमारे अंदर बचपन से ही इतना धर्म को लेकर हमारे माइंड कंडीशन किया जाता है कि हम ओपन माइंड हो ही नहीं सकते। तो ये सारी कंडीशनिंग जो हमें जन्म के साथ
अपनी जाति, समाज, धर्म, देश से मिलती है। हमको जय कृष्णमूर्ति के कथन के अनुसार हमको उसको खुद देखना होगा। कोई गुरु भी नहीं बता सकता, कोई गुरु नहीं बता सकता, कोई पुस्तक नहीं बता सकती, कोई संवाद परिसंवाद से हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनिंग तोड़नी हमको ही है, ऐसा मुझे लगता है। Yes. ये True. यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। यस विमल जी। I just wanted to say that there was one point where Hasmukh-ji said, forgive yourself. So I have rarely heard, and he said it twice, I think, because I think we are our worst critics. And our mind is always telling us negative things about us also, not only about others. So I think this is a very big lesson for me, that we have to stop being our worst critics, and we have to forgive our mistakes. Then only we can move on from wherever we are. And I really thank Hasmukh-ji and Jasuben-ji. Open mind as the first of those steps. Or it's amazing that you brought this out today. So thank you so much. Thank you, Vimal ji. Open mind is the, if I may say, open mind is the flag bearer of the whole Suvarnasri की प्रार्थना. Golden States की जो steps है, उसका flag bearer है open mind. Yes, क्या बात। Sure. Right. Yes, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन भाई, yeah. हाँ. Right. I was just thinking about the time. That was just I raised a hand, but I think that the time is limited. So one point is very clear about what Krishna ji says at the feet of the master. It is the power of discrimination. Whenever you feel something going wrong, you must have the discrimination. You should think over that, but don't jump out. Don't go for any decision. Don't show any judgment. Just watch it, observe it. So that is the way that we can come to conclusion, and we can pacify our mind. Mind very important, because other notions will disturb us, like the notion of jealousy, notion of anger, notion of others, sadness. Everything is there, but we have to keep calm. तो बड़ी अच्छी बात होती है कि जब हम शांत रहते हैं, और जो हमारी जिसके जो हमें अन्याय करते फिर भी उनको कुछ नहीं कह पाते हैं, तो उसमें भी वही बात बनती है कि आपको शांत ही रहना है जी। एक और बात कृष्ण जी ने बताई, जो मैं यहाँ कह दूं, बड़ी ही सलूट उन्होंने बताया कि अगर आपके दिल में कुछ दर्द है तो आप उसको लिख लो, आप उनको लिखो, आप डायरी बनाओ और मेंटेन करो कि डायरी में आप लिखो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो आपके दिल में से वो कांटा जो चुभता है वो निकल जाएगा, फिर वो जस्टिफिकेशन में नहीं जाएगा। ऐसी बात होती है, बड़ी लंबी बात है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत बढ़िया हर्षवर्धन भाई, और मुझे लगता है सेकंड सेशन खुले मन का, मुक्त मन का, ओपन माइंड का जरूर रखना पड़ेगा। अनिल भाई, आप देवानी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। इज माय यंगर ब्रदर। अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो गया। Can you hear me now? Yes. Congratulations, Hasmukh. Congratulations, Bobby. Wonderful chat indeed. The only thing I would want to add, can you hear me? Yes, loud and clear. Yeah. The only thing I would want to add is two little things. There was one speaker who came in there, Dr. somebody, and she said a wonderful point, the condition that we have all our lives. And that is so true, actually, because that is truly the rust that we collect all our lives from the day we are born till now. And one thing that I also feel very strongly, having been in this part of the world for most of my adult life, that we are, inheritors of this culture. How much of that are we trying to pass on to our next generation, the generation after? And how much are we influencing by this condition that we probably have as well? So I think we have to be very careful and alert about the condition that we have to try to go forward in what the lecture has been absolutely fantastic.
And also, we are in a position to condition our children, our grandchildren, our friends, our brothers, our sisters, our family. Are we conditioned to that? And are we conditioning them? Are they conditioning us? Are we aware of those conditions? I hope I'm relating what I'm saying. But seriously, a wonderful, wonderful afternoon. I'm glad I touched with this. Other things to do, but I did that. Hasmukh, well done. Bobby, wonderful. God bless. Thank you. Take care. Bye. Thanks Anil bhai for joining त्रिवेणी पर की तरह की बड़ी सुंदर त्रिवेणी है। Dubal is तीन ज्ञान की गंगाएं मिलती हैं। हसमुख दुबल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? Yeah, Dubal was a very close associate with me in Dar es Salaam. And we are working together all the time in Dar es Salaam Lodge. And we are also happy that you of Triveni also. He is my guide. He is a very active worker here with me now. You are my guide. Now again I am getting him online. This is an opportunity, and today it is a nice subject. As J. Krishnamurti has said, to keep the open mind, we must have the choiceless awareness. That is very important. Then only we can have open mind, and we don't keep any grudges, and then we can progress on our path. It was a good subject. Thank you, Asubai, Asmukhbhai, Jasuben, from the Join Above Anand show. हमें बहुत आनंद आया होता है जोड़ने। Thank you अशोक भाई। आप बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, बोलिए। अर्चना जी, आप बोलना चाह रही हैं। હસમુખ ભાઈ, જસુબેન, ફેન્ટાસ્ટિક ઓરેટરશિપ, ખૂબ શીખવાનું મળ્યું અંગ્રેજી અને ગુજરાતીમાં જે સહજતાથી જસુબેન બોલ્યા છે ને, ખૂબ મને મજા આવી। અને હસમુખભાઈ એટલે એમાં અમે ઓતપ્રોત થઈ ગયા. ફોર ધ અધર પીપલ હુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગુજરાતી, I said the fluency and the oratorship of course, Hasmukh-bhai was very nice in English, but in Gujarati, Jasuben gave a little flavor of a like young, a mother explaining to the child, I would the easiest way. And I love her diction. That is what I'm complimenting her. I'm really in awe. And हर्षद भाई तो संभाल ही लेते हैं इतनी अच्छी हिंदी से, तो बहुत ही मजा आई। और मुझे सबसे ज्यादा बात अच्छा लगा, जो मेरे को लगता है कि मैं प्रैक्टिस थोड़ा कर सकती हूँ, लेट गो कभी कभी नहीं होता है मेरे से, तो अब मैं बोलने वाली हूँ लेट गॉड। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प मी नाउ। So when I will not be able to let go, I will say let God. Thank you so much. रमेश जी, मजीठिया जी, आप भी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, अगर कुछ कहना हो कह ही दीजिए। प्लीज से समथिंग। अनम्यूट कर लीजिए। हर्षवर्धन भाई, लगता है कहीं चल पड़े हैं आप। Very stimulating, very interesting, very enjoyable subject and the talk. The mind, as Bhagavad Gita says, right beginning of the first chapter, Dhritarashtra is a symbol of the mind, and the mind is blind. That's what Bhagavad Gita is telling us. The mind is blind. So, and it's only accepting what the indriyas, the five indriyas say, whatever they say, that is what is received by the mind. So the mind is so vast. There is the subconscious mind and there is a conscious mind. Very small part is the conscious mind. The vast part is the subconscious mind. So I think wonderful talks like these will fill up the mind with these kind of talks, fill up the mind with Krishna, fill up the mind with Bhagavad Gita and all the scriptures, and just submit yourself to the Almighty, and hopefully you see your progress. Yeah, and don't worry about the ego. Yeah, the ego will take care of itself. Fill the mind, totally fill the mind with good thoughts and the scriptures, and have a satsang like this, very powerful. The most powerful thing is the satsang, so togetherness, talking about this subject is fantastic. So thank you very much for
for this, and hopefully you will do some more programs like this. Thank you, Hasmukh. Ramesh Bhai is all the speakers. Thank you. Yes, Hasmukh Taral bhai. Bhai. Ramesh Bhai is the initiator of our Zoom meeting in Canada and Leicester. He was the one who inspired me there. Yes. You are the inspiration, Hasmukh bhai. So Ramesh bhai, please keep joining every Tuesday. We have all sorts of subjects here, and everyone is very free with an open mind to have the subject of their own. We don't give subjects to the speaker. The speaker themselves come out with whatever they wish to speak. That's why, because they come out with Mukt Man, Khullu Man, or the open mind, things happen very well on this Triveni. Thank you so much, all of you. I will request Atul bhai to go for the ending prayers, please, and everybody stay there. કેશવરબેન શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो
विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। ईश्वर बहन बहुत बहुत धन्यवाद।